नमस्कार दोस्तों, ई टेक्नो लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। द क्वेश्चन इज सॉल्व y इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे with equation m into dx plus n into dy equal to 0. So on comparison we get value of m as y in bracket x square y plus e raised to x. Let us simplify this equation. So we get x square y square plus y into e raised to x. Now इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली with respect to y. So we write del m upon del y equal to, now derivative of first term, यहाँ पे x square will be constant क्योंकि हम differentiate कर रहे हैं with respect to y, and derivative of y square with respect to y will be 2y. So we write x square in bracket 2y plus derivative of second term, यहाँ पे derivative of y with respect to y will be 1 and e raised to x will be constant. So we write 1 into e raised to x. So therefore we get 2x square y plus e raised to x. Let us name this as equation 1. Then value of n will be minus e raised to x. इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे partially with respect to x. Therefore we write del n upon del x equal to, now derivative of e raised to x will be e raised to x only. Therefore we write minus e raised to x. Let this be equation number 2. Now equation 1 और 2 को compare करने के बाद we can say that del m upon del y is not equal to del n upon del x, and therefore given differential equation is not exact. And now इस equation को हमें exact बनाना होगा by multiplying it with some suitable integrating factor. Now इस integrating factor को decide करने के लिए there are 4 criterias. उनमें से एक criteria है of this homogeneous equation. If given equation is homogeneous, then we can use this criteria. So let us see. तो यहाँ पे first term contains x square and y square, but second and third term contains e raised to x. तो ये equation homogeneous नहीं हो सकता. So therefore we cannot use this criteria. Then next criteria is if we can take y common out of first term and x common out of second term, then we can use this criteria. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म में y कॉमन है बट सेकंड टर्म में x कॉमन नहीं निकल सकता. सो वी कैनॉट यूज दिस क्राइटेरिया आल्सो. देन कम्स दिस थर्ड क्राइटेरिया ऑफ दिस रेशियो, दैट इज del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x होल डिवाइडेड बाय n. नाउ इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं so that we can decide whether this criteria is useful or not. Therefore del m upon del y minus del n upon del x, that means equation 1 minus equation 2. तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2x square y plus 2 e raised to x whole divided by n, that is minus e raised to x. तो यहाँ पे फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो कैंसल आउट हो सके, तो ये क्राइटेरिया भी हम नहीं यूज कर सकते. सो नाउ रिमेनिंग इज ओनली दिस क्राइटेरिया. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. सो डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू del n upon del x is minus e raised to x minus del m upon del y is 2x square y plus e raised to x. Let us open up the bracket. तो हमें यहाँ पे मिलेगा minus 2 e raised to x
minus 2x square y, this whole divided by m, that means y in bracket x square y plus e raised to x. Now from numerator we can take minus 2 as common, तो यहाँ पे हमें मिलेगा minus 2 in bracket x square y plus e raised to x. So from numerator and denominator this bracket will get cancelled, तो हमें यहाँ पे मिलेगा minus 2 upon y. That means this ratio is a function of y. Therefore in this case the integrating factor is given by e raised to integration of gy into dy. Let us substitute the value of gy. So therefore e raised to integration of minus 2 upon y into dy. Now यहाँ पे minus 2 is constant, so we write e raised to minus 2 into integration of 1 upon y into dy. Now integration of 1 upon y is log y, and we can write this as e raised to log y raised to minus 2 by following this logarithmic rule. And e raised to log y raised to minus 2, इसे हम लिखेंगे y raised to minus 2 by following this logarithmic rule, and therefore यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा 1 upon y square. So let us multiply the given equation with this integrating factor. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x square y plus e raised to x upon y into dx minus e raised to x upon y square into dy equal to 0. Let us simplify it further. So we write x square plus e raised to x upon y into dx minus e raised to x upon y square into dy equal to 0. Now this equation is exact. Therefore यहाँ पे value of m will be x square plus e raised to x upon y, and value of n will be minus e raised to x upon y square, and the general solution is given by integration of m dash into dx plus terms in n dash free from x into dy equal to c. Now इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एन डैश हमें सिर्फ वही टर्म्स कंसिडर करने हैं जिनमें x नहीं है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है. सो वी विल सिंपली राइट इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी वाई इक्वल टू सी. लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्दर. सो वी राइट integration of x square into dx plus, now from the second term 1 upon y will be constant, so we write 1 upon y into integration of e raised to x into dx equal to c. Now integration of x square into dx is x cube upon 3 plus integration of e raised to x is e raised to x only, so we write e raised to x upon y equal to c, and this is our final answer. Next question is dy upon dx plus y log y divided by x minus log y equal to 0. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सो वी राइट dy upon dx equal to minus of y log y divided by x minus log y. Then after cross multiplying we write dy into x minus log y equal to minus dx into y log y. Now इस टर्म को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे. सो फाइनली वी गेट y log y into dx plus x minus log y into dy equal to 0. Now इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे with equation m dx plus n dy. So on comparing we get value of m as m equal to y into log y. Now इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे partially with respect to y. This equation is a product of two functions y and log y. Therefore हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को
यूज़ करेंगे. Therefore we write del m upon del y equal to derivative of first term, that is del upon del y of y into second term as it is, that is log y, plus derivative of second term, that is del upon del y of log y into first term as it is, that is y. So therefore we get del y upon del y is 1 into log y plus derivative of log y is 1 upon y into y. So therefore del m upon del y is equal to log y plus 1. Let this be equation number 1. Similarly, value of n will be x minus log y. Now इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली with respect to x. Therefore we write del n upon del x equal to derivative of first term, that is x, is 1 minus derivative of second term, that is log y, will be 0 because we are differentiating with respect to x. Therefore let this be equation number 2. Now इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद वी कैन से दैट del m upon del y is not equal to del n upon del x, and therefore given differential equation is not exact, and hence इस इक्वेशन को हमें एग्जैक्ट बनाना होगा by multiplying it with some suitable integrating factor. Now इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सिलेक्ट करने के लिए देयर आर 4 क्राइटेरियाज. उनमें से एक क्राइटेरिया है of this homogeneous equation. Now if the given equation is homogeneous then we can use this criteria. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे first term contains log y but second term do not have any log y term. So therefore this equation is not homogeneous and therefore we cannot use this criteria. Next criteria is if we can take y common out of term containing dx and x common out of term containing dy, then we can use this criteria. तो जैसा कि आप देख सकते हैं in first term we can take y as common but second term में x common नहीं लिया जा सकता. Therefore we cannot use this criteria. इसके बाद आता है criteria number 3 where we use the ratio del m upon del y minus del n upon del x whole divided by n. If this ratio is a function of x then we can use this criteria. So let us substitute the value del m upon del y minus del n upon del x is equal to log y plus 1 minus 1. So we get log y whole divided by n, that is 1. Now this value is not a function of x, therefore we cannot use this criteria. So the last criteria is this one. Let us substitute the value here. So we write del n upon del x minus del m upon del y equal to 1 minus log y plus 1. Let us open the bracket. तो हमें वैल्यू मिलेगा माइनस log y. Let us divide by m. Therefore we write minus log y divided by y into log y. Now यहाँ पे log y from numerator and denominator will get cancelled, so we get minus 1 upon y. Now यहाँ पे we can say that this value is a function of y and therefore the integrating factor in this case is given by e raised to integration of gy into dy. Let us substitute the value of gy. So we write e raised to integration of minus 1 upon y into dy. Now integration of 1 upon y is log y, so we write e raised to minus log y. इसे हम लिख सकते हैं e raised to log y raised to minus 1 by following this logarithmic rule. Also e raised to log y raised to minus 1 इसे हम लिख सकते हैं y raised to minus 1
बाय फॉलोइंग दिस लॉगरिथमिक रूल। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा 1 अपॉन y। So let us multiply the given equation with integrating factor. So now यहाँ पे this y will get cancelled, hence we write log y into dx plus x upon y minus log y upon y into dy equal to 0. Now this equation is exact and hence value of m dash here will be log y and value of n dash will be x upon y minus log y upon y, and general solution is given by integration of m dash into dx plus integration of terms in n dash free from x into dy equal to c. Let us substitute the value here. So we write integration of log y into dx plus, now यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ n डैश हमें सिर्फ वही टर्म्स कंसिडर करने हैं जिनमें x नहीं है. सो सेकंड टर्म satisfy this criteria, therefore we write minus integration of log y upon y into dy equal to c. Now for the second term we will use the method of substitution. So we write log y equal to t. Let us take derivative. So we write 1 upon y into dy equal to dt. Now यहाँ पे in first term a log y will be constant because we are integrating with respect to x. So we write log y into integration of 1 into dx minus, instead of log y we will write t, and instead of dy upon y we will write dt equal to c. Let us simplify this further. So we write log y into integration of 1 into dx is x minus integration of t is t square upon 2 equal to c. Let us substitute the value of t back into equation. So we write x log y minus log y square divided by 2 equal to c, and this is our final answer. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो.